Hello everyone, welcome to iExamB. I am Prachi Agarwal, the finance expert faculty at iExamB with more than 15 years of experience in the finance space. In this particular video, today I am going to talk about the new India Assurance Company Limited exam that was held on the 8th of October for the accounts stream. This exam is specifically more important if you are giving exams like Airports Authority of India Finance Stream or United India Insurance Company Limited from the accounts or finance stream. ये दोनों एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है एंड बहुत क्विकली होने वाले हैं. 19 अक्टूबर 2023 को है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फाइनेंस स्ट्रीम का एग्जाम 23 अक्टूबर 2023 को है. सो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग ये कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो you should listen to this video till the end to understand किस तरीके के questions आ रहे हैं and आपको किस चीज़ पे concentrate करना चाहिए before your exam for these two papers. So stay till the end. In the end, I will also discuss the topics for United India Insurance Company and the Airports Authority of India that you should be focusing on for your revision before the exam. So let's talk about NIACL का accounts exam and here I will discuss the professional knowledge part. So the professional knowledge part for the accounts paper, you can divide the questions that came in the 5 broad categories. There were questions from the accounts जो आपके basic accounting से related questions होते हैं. Then finance and banking, this was more related to financial markets, yeah, generally around news related, what is happening around you in the finance space. Corporate law से related था जो majorly आपका Companies Act include करता है. And then there were questions from the tax. Only income tax is what we understand was asked. And there were some other sections जैसे because this was an insurance industry related exam तो इसमें insurance के कुछ questions थे, कुछ आपके costing से related भी questions थे. So we will look at now each of these broad categories and किस तरीके के questions उसमें से आए थे. If I talk about accounts, the questions came from 3 subtopics. One was accounting standards, others was ratios, and then basic accounting के कुछ questions जो आपके accounting principles, जो हम basic accounting की बात करते हैं तो accounting principles related या फिर entries, rules of entry related questions होते हैं. So accounting standards में इन्होंने बहुत important और बहुत ही expected accounting standards पे questions पूछे थे, if I can say that. They had not even asked in AS, they asked for accounting standards 9 and 10. 9 आपका related होता है revenue recognition से and 10 आपका related होता है property, plant and equipment जिसको generally we know as fixed assets, right? Fixed assets and depreciation का जो हम पहले aspect बात करते थे, that is what is covered under property, plant and equipment. So इससे related क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में. देन रेशियोज, वी ऑलवेज स्टेट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हम रेशियोज के थ्रू करते हैं किसी भी अकाउंट्स या फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम में इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. So there was one this time based on average debtor collection period. Debtor आपका क्या हो गया? Receivables, right? So हमारे जो account receivables होते हैं उसमें कितना collection period है उससे related आपका एक question था यहाँ पे numerical type का. And एक basic accounting question था कि credit note in which book is it used, right? So credit note, basically credit note देने का मतलब होता है कि हम किसी को benefit दे रहे हैं, we are reducing the cost. तो usually ये जो होता है ये sales book का part होता है, right? क्यों? sales book में basically credit note दिया जाता है जब कोई किसी तरीके का refund हो रहा हो या goods return हो रहे हो, right? So company ने जब sale करी है, right? तो वो अपनी sales book में sale को book करती है एंड इन केस उस सेल्स में कुछ रिटर्न होता है या कुछ रिफंड होता है तो क्रेडिट नोट उसके अगेंस्ट इशू किया जाता है टू गेट द नेट इफेक्ट. सो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड कि क्रेडिट नोट किस बुक का पार्ट होता है. So these were some questions. Of course, these are certain questions that we have got on the memory-based basis. If you remember any more questions, कोई additional आपको topics याद हो तो please write it in the comments box. Here I'm also showing you the
कवरेज आई एग्जाम बी में ये काफ़ी डिटेल्ड, एज आई सेड कि AS9 और AS10 काफ़ी एक्सपेक्टेड एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किसी भी अकाउंट्स या फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम में. सो यहाँ पे भी देयर वर नो सरप्राइजेज, इन्होंने इससे पूछा था एंड काफ़ी वाइडली कवर्ड है आई एग्जाम बी में ये कोर्स में भी, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ईजिली ये कर पाए थे, बोथ इन फॉर्म ऑफ वीडियो, लाइव क्लास, MCQ, मॉक टेस्ट में टेस्ट एंड इवन PDF के फॉर्म में इनका काफ़ी वाइड कवरेज हुआ है. आई हैव जस्ट शोन यू एज एग्जाम्पल ओवर हियर सम ऑफ द कवरेज. सिमिलरली एवरेज कलेक्शन पीरियड की अगर मैं बात करूँ, रेशियोज काफ़ी फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है एंड वाइडली कवर्ड टॉपिक है आई एग्जाम बी में भी. प्रतीक सर हु इज़ अ CA वो बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं इसको और आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना हो. सो दीज वर वेरी वाइडली कवर्ड. Before I move on to the next section, which relates to finance and banking related questions, let me just tell you that iExamB पे आपको सारे mock test free में मिलते हैं, so you can practice them if you are giving the UIICL, which is the United India Insurance Company Limited exam from legal, accounts or finance space or agri space. You can go on iExamB's website. You can go on iExamB website under the free mock test. You will be able to find mock tests for various exams, including UIICL and even AAI. AAI का भी finance के papers भी, legal के papers भी, you can easily attempt free of cost quality mock test for your exams. Let's move ahead and look at the next section, finance and banking. फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आए थे इसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी. देयर वर फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड क्वेश्चन एंड देन देयर वर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन. फाइनेंशियल मार्केट्स रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपका कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे. तो एक तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, आई एम श्योर सब लोग ने सही किया होगा. कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? राइट, सो कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर हमारी कंट्री में सेबी है. Okay, so SEBI is the capital market regulator, very strong regulator. That was a very simple direct question that was asked. दो तीन क्वेश्चन और जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा गए थे वह रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड NAV. NAV होती है नेट एसेट वैल्यू. सो म्यूचुअल फंड जो आप जैसे हम शेयर प्राइसेस की बात करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जिसमें मनी पूल किया जाता है बहुत सारे लोगों का, उसमें जो भी एक यूनिट होता है उसकी ना वैल्यू निकाली जाती है. तो पूरे फंड की जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उससे हम जब डिवाइड करते हैं तो NAV आता है. राइट, सो जो फंड वैल्यू है उसको जब डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स से, राइट, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? एवरी यूनिट दैट रिप्रेजेंट्स योर होल्डिंग इन द म्यूचुअल फंड और योर इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, तो आपको NAV मिलती है, नेट एसेट वैल्यू. राइट, सो इससे कैलकुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. आपसे हेजिंग रेशियो क्या है ये पूछा गया था. सो अगेन अगर आपने हेजिंग पता है तो हेजिंग रेशियो अटेम्प्ट करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड दिस इज समथिंग दैट्स व्हाट वी कीप फोकसिंग ऑन एंड रीटरेटिंग एट iExamB की हमें अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी रखनी है कि क्वेश्चंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाए तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दी ऑप्शंस व्हाट कैन बी द बेस्ट आंसर. सो हेजिंग रेशियो में अगर आपको हेजिंग जानते हैं, हेजिंग में हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर रिस्क with the help of certain financial derivative instruments. राइट, सो हेजिंग रेशियो में आपकी जो भी ओपन पोजीशन है उसमें आप कितना हेज कर रहे हो. से फॉर एग्जांपल अगर आपका रिस्क 600 करोड़ का आपका एक ओपन एक्सपोजर है एंड उसके अगेंस्ट आपने डेरिवेटिव्स लिए से 300 करोड़ के, सो आपका 0.5 हेजिंग रेशियो बन जाता है. सो हेजिंग रेशियो इज हाउ मच ऑफ योर पोजीशन यू हैव हेज्ड जिसमें आपको रिस्क लगता है. So that was one question that was asked, and then there was a question related to the futures contract. Futures is also a derivative instrument. तो ये सब जो आपका है आप एक तरीके से बोल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट था, एंड ये आपके सिंपली कैपिटल मार्केट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे.
ओके, मूविंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जब कंपनीज अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करें टू इम्प्रूव द रिटर्न्स फॉर द कंपनी. सो दैट इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स टू. तो इसमें आपके एक फाइनेंशियल लेवरेज से क्वेश्चन था. ये अगेन हमने काफ़ी वाइडली कवर किया था अपनी क्लासेस में भी, रिविजन क्लासेस में भी, डाउट क्लासेस लाइव जो करते हैं हम, एंड अदरवाइज ऑल्सो कंटेंट इज अवेलेबल इन द course. And then there was a question related to currency conversion. तो आपको करेंसी शायद USD से येन में कन्वर्ट करनी थी या वाइस वर्सा. सो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को याद नहीं है. एज आई सेड, अगर आपको और भी एडिशनल क्वेश्चंस याद आ रहे हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स बॉक्स. इट विल help you further to prepare. So currency conversion से related questions था again through notes, PDF notes, the concept of cross rates, how the conversion from one currency to other is done, is widely covered in iExamB. Moving to the next section is the corporate law, which I stated you mostly refers to your Companies Act of 2013. इस Companies Act के अंदर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे. वन वॉज सेक्शन 52 रिलेटेड. ये सेक्शन 52 आपका होता है इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम. जब आप शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं, दैट मीन्स फेस वैल्यू आपने नोटिस किया हो मे बी दैट द शेयर प्राइस शेयर्स के 10 रुपीज़ होते हैं, राइट. बट उनमें मार्केट में वैल्यू उनकी 400, 500, 1000, 200, किसी भी अलग अलग वैल्यूज़ होती है, राइट. या फिर इशू प्राइस जब किया जाता है, जब IPO आता है, तो जो प्राइस अबव द फेस वैल्यू उसको हम प्रीमियम बोलते हैं. तो उससे रिलेटेड रूल्स हैं कंपनीज एक्ट में कि कंपनी जब इशू कर रही है प्रीमियम पे तो कैसे यूज़ कर सकती है. तो इसमें जो क्वेश्चन था कि जो भी ये कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम इकट्ठा करती हैं या दे गेट दिस वाइल इशूइंग शेयर्स, हाउ दे कैन यूज इट, राइट. सो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है Companies Act में that securities premium can be used for which of the purposes. It can be used for issue of fully paid bonus shares, to write off preliminary expenses, to write off any commission paid on the issue of shares, for premium payable on any redemption, or for the buyback of its own securities. So Companies Act में ये clearly mentioned and again explained in the iExamB course also. नेक्स्ट क्वेश्चन 123 सेक्शन से रिलेटेड था, जो बेसिकली डिविडेंड पे आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है. अगेन वेरी एक्सपेक्टेड और यू कैन से वाइडली recurring kind of topics have been asked. There were no surprises, I will say, when questions have been asked from corporate law. And third question आपका related था debenture redemption reserve से कि what happens to the debenture redemption reserve once the debentures have been redeemed. So once the rate has been redeemed, see its purpose has been fulfilled, right? So if once its purpose has been fulfilled, if any balance is remaining, you can always take it back to the general reserve. Again, there was coverage related to debenture redemption reserve in the course. The next section, tax, we have got to know only one question as of now. Again repeating, if anybody knows more questions, please do share. यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इनकम टैक्स में आपको जो 80C के अंडर बेनिफिट मिलता है डिडक्शन का, म्यूचुअल फंड के केस में वो कितना अलाउड होता है, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड में यू शुड बी इन्वेस्टेड. सो जो म्यूचुअल फंड इट्स नॉट लाइक कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा. देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स विच आर कॉल्ड ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. ओके, सो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ये एक तरीके का इक्विटी म्यूचुअल फंड है. सब जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर 80C, एंड इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 years तक लॉक्ड इन रहना चाहिए, राइट. सो इस तरीके के एग्जेम्पशन के रूल्स होते हैं. अगेन समथिंग अंडर इनकम टैक्स इट वाज कवर्ड. यू हैव टू हैव एटलीस्ट 3 years लॉक इन. ऐसे ही अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जैसे फिक्स डिपॉजिट आप करो तो सारी फिक्स डिपॉजिट में नहीं अलाउड होता है. अगर 5 years के लॉक इन पीरियड वाली आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, राइट. यूलिप अदर इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो ये भी पूछा जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्स में. मे बी इन्होंने म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा ध्यान दिया बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द अदर competing products from agar if we look at the investment side, although investment and insurance are very separate financial products.
ओके, मूविंग टू द अदर सेक्शन, कुछ इंश्योरेंस एंड इरडा की गाइडलाइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, विच यू कैन से मोस्टली इंश्योरेंस का एग्जाम है तो इरडा की जो भी गाइडलाइंस न्यूज़ में थी, तो दिस वाज मोर लाइक जनरल एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए. सो इफ अगर आप रेगुलरली बी पीडिया फॉलो करते हैं आई एग्जाम बी की, या फिर इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग द न्यूज़, आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते. एक क्वेश्चन कॉस्टिंग से रिलेटेड था, विच इज द कैलकुलेशन ऑफ बीईपी, विच इज ब्रेक इवन पॉइंट. अगेन नो सरप्राइजेस, कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक इज बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट. सो एज आई स्टेटेड, कोर्स में insurance awareness, financial awareness was covered, which also helped to do questions of capital market जो हमने discuss किए थे. And BEP as a topic is also very well explained in the course for various accounts and finance exams. So these were broadly the questions, the categories and the types of questions that came in NICL accounts exam. And now very much more important thing is to look at is what and how you should prepare in these last few days for your UIICL and AAI finance exams, right? So let's have a quick look. This is the syllabus that is given by United India Assurance Company Limited for your accounts and finance paper. I will categorize this into 7 aspects. आपका पहले है basics of account, आपका ratio second topic हो गया, general insurance related accounting third, in tax में आपका fourth आ गया. IFRS is something as accounting standards, right? तो जो इंड, तो इसमें आप कर सकते हैं कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में, विच आर इन लाइन विद IFRS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो लाइन में है. सो दिस इज योर फोर्थ. ओके, GST is your fifth. GST plus your income tax, okay, income tax and also overall your taxation. Digital ecosystem for payment and collection, तो ये आपका बैंकिंग एस्पेक्ट आता है, बट मोस्टली ओनली लिमिटेड टू द पेमेंट एस्पेक्ट. एंड देन द कंपनी लॉ, विच इज अगेन योर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. सो ये 7 में अगर हम बोलें, एन एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फाइनेंस स्ट्रीम अपार्ट फ्रॉम योर general aptitude topics, right? So easily you should focus and give very good importance to all these topics. Basics of financial accounting, say you can expect some 10 to 11 questions easily, which can be based on your accounting conventions, accounting principles, entry ruling, entry ledgers से related simple questions आपके पूछे जा सकते हैं यहाँ पे. Ratios से you can expect again another 5 marks kind of 5 questions on ratios. इसमें काफ़ी possible है कि आपसे collection period या फिर current liability या return से related questions पूछे जाएं. General insurance accounting, another 5-6 questions is what you can expect. This has been separately covered for the insurance specific exams, United India Insurance Company Limited for you. So वो course में आपको separately प्रतीक सर ने बहुत अच्छे से explain करके करवाया हुआ है. Then income tax and GST together. Income tax and GST together. Again, we can expect 6-7 questions from these two topics. Accounting standards, say you can again expect 6 to 7 questions. Most important will be revenue recognition, depreciation, inventory. Not inventory valuation may not be very important here. Forex से related आपका and investment से related वाले आपके काफ़ी important हो सकते हैं. In addition, इंश्योरेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है जो पहले था, उसको भी कवर किया गया अंडर इंश्योरेंस अकाउंटिंग, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. When it comes to digital ecosystem for payment and collection, again you can expect 5 to 6 questions over here from this topic. In this, some important digital ecosystem that has been built by RBI for payment, UPI से related questions हो सकते हैं, क्योंकि आप UPI भी use कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए भी, right? So वो सारे type के questions. What are the other different types of payments that can be done digitally? This you have to
cover here. And companies law में again I expect a good number of questions that which may go up to even to 8 to 10 questions that can come. आपके लिए इसमें important topics कौन से होंगे? Chapter 3, Chapter 4, okay, Chapter 8 जो dividend से related है, and your ऑडिटर्स का चैप्टर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चैप्टर है आपका डायरेक्टर्स से रिलेटेड. सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए कंपनीज लॉ में. Similar kind of thought you will have to follow in AAI also if you are preparing. Financial accounting of course will be important. Corporate accounting is similar, making the financial statements is what here financial corporate accounting will fall under. Business law, corporate law with emphasis on Companies Act. Again, Companies Act का सबसे ज़्यादा importance होगा. Maybe they ask 1 or 2 questions on other business laws like the Contract Act, but आपका major क्वेश्चंस यहाँ से ही एक्सपेक्टेड है. ये आपका गेम चेंजर नहीं होगा. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज समथिंग जो एडिशनल आपको एआई में दिखना होगा सेपरेट फ्रॉम अकाउंट्स, राइट. सो इसमें बिजनेस एंड मैनेजमेंट में भी ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट यू शुड फोकस ऑन इज द मैनेजमेंट अप्रोचेस, राइट. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सबसे वाइडली फॉलोड है. सो यू शुड नो हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स, डिफरेंट रोल्स ऑफ अ मैनेजर, मैनेजमेंट का जो फंक्शंस होते हैं 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइट. वो आप उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉट टू मेनी कॉम्प्लिकेटेड, एंड योर लीडरशिप स्टाइल्स, ओके. एंड सम वेरी वेरी वाइडली फॉलोड मोटिवेशन थ्योरीज जैसे आपकी मैस्लो थ्योरी होती है, राइट, या फिर आपकी हर्सबर्ग थ्योरी है, राइट. सो वो आपका इफ यू नो अबाउट दिस शुड बी गुड फॉर योर दिस पार्ट. Income tax में again, income tax में I would suggest you know the different kinds of classifications of income heads, the different kind of deductions that are there, and certain rates in terms of the tax slabs and all. इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली आपका जीएसटी वाले रूल्स आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑफ जीएसटी, फाइलिंग ऑफ जीएसटी से रिलेटेड, ऑपरेशनल. कॉस्ट अकाउंटिंग में एज वी डिस्कस बीईपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सब पार्ट होता है. एंड अदरवाइज जेनरिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग इज, व्हाट द डिफरेंट टर्म्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइक व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज यूनिट कॉस्ट, right, what is an indirect cost, what is a direct cost, these kind of terminologies you should be very very well versed with. Financial management में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में आपका कैपिटल बजटिंग में एनपीवी एंड आईआरआर आर इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट. ऑडिटिंग में ऑडिटर्स अंडर कंपनीज एक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स दैट कैन बी डन विद एम्फेसिस ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यही मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए एंड उसके लिए ऑडिटर क्या करता है, दैट थिंग. E-commerce, fundamentals of investment and working knowledge of ERP can be very very scoring topics for you, है ना. So MS Office या ERP में basically shortcuts पूछे जा सकते हैं, shortcut keys क्या होती हैं, right. So those kind of questions can be important. E-commerce में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ई कॉमर्स साइट को बिल्ड करने के लिए किया जाता है, ई कॉमर्स के करने के क्या क्या तरीके होते हैं, दे कैन बी B2B, दे कुड बी B2C, एंड राइट, एंड व्हाट कैन बी द स्ट्रक्चर्स दैट द कंपनीज हैव टू मेक इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रनिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट. दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड हियर. फाइनेंशियल मार्केट्स विल बी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने NICL में भी देखा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे. हु इज द रेगुलेटर ऑफ से कैपिटल मार्केट्स, हु इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, ओके. मनी मार्केट ये RBI से भी नहीं है, ओके. सो ऐसे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ लिया, राइट. AIFI क्या होता है, ये NHB क्या करता है, राइट, या SIDBI क्या करता है, या एग्जिम बैंक क्या करता है, राइट. सो ऐसे करके फाइनेंशियल सर्विसेज अलग अलग, जैसे आई टोल्ड यू इन्वेस्टमेंट and insurance are different financial products, okay. Mutual funds भी एक financial service है, right. Merchant banking एक financial service है, right. So all these terminologies related questions can be expected. I don't expect the exam to be too difficult. It's just that the questions आपके wide हो सकते हैं because यहाँ पे 70% weightage है, तो easily आपके 80 to 84 questions exam में इसी section में से आएंगे. So they will be widely spread. आप किसी भी topic में 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा, राइट. व्हेन आई एम सेइंग 5-6 क्योंकि यहाँ पे कुछ सब टॉपिक्स भी बीच में है.
So किसी भी टॉपिक में आपके 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे, and they are expected to be of the easy to moderate level. So try to cover widely. प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, आप आई एग्जाम की वेबसाइट पे बहुत इजीली मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड एंड सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर. सो wishing you all the best. If you need any guidance, any help, you can also join iExamB. We offer course for UIICL and for AII also, both of them, where you will get course videos. You also have study notes to revise from. You have mock tests to practice from. There are 7 mock tests in the exam pattern covering all these topics, and also the aptitude, quant, reasoning, data interpretation related, and general awareness, financial awareness related questions there. And we also do live classes. So for AI, in addition to the classes that were already going on, we are doing 2 revision classes on the 14th and the 16th of October before the exam. These classes, this content for finance is led by 3 faculties at iExamB. Prateek sir, who is a CA and expert in accounts and costing part. Myself, Prachi Agarwal. I have 15 years of experience in finance, as I said, an expert in financial markets related topics and financial management topics. And Neha ma'am, who widely covers accommodation with more than 6 years of experience now in guiding for various exams and having herself cleared many finance exams. In case you have any other query, you can always reach out to us. So wishing you all the best for your upcoming exams. You can always contact us at 920-552-4028 or reach out to us at hello@iexamb.com. Please don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon for more informative videos so that we can help you prepare 50% faster always. All the best again.